सर रीनेम का ऑप्शन दो. क्या नहीं है? रीनेम का ऑप्शन. रीनेम. Yes sir. What do you want to rename? My name. अच्छा, in chat box. No sir. In participants. कर दिया, सेटिंग कर दिया, रीनेम कर खुद को. हाँ सर. Okay. Okay, thank you, Junun. Sorry. Okay, so let's begin. So yesterday we started with the help of this news. I taught you in detail about the G20 groupings. Okay. So very first thing about a G20 group is it is a premier forum for international economic cooperation. Okay. So where is the permanent secretariat of G20? Saudi Arabia. नहीं. Now you have to listen to carefully what I am asking, and you have to answer in chat box so that others cannot listen to your answers and imitate Okay, you. sir. Okay. Yes, I asked the question, where is the permanent secretariat of G20? Anyone remembers? Very good, Mithilesh. Very good, Ashutosh. Excellent. This is what I was expecting. That basically this was a catch. Okay. And there is no permanent secretariat for G20. Okay. There is a chairman or president every year of a grouping, and the president of G20 for this year is chat box. Write in the chat box who is chairing G20 group currently. Yeah, very good. श्रेयस, so अरेबिया का स्पेलिंग चेक करो एक बार. There is no Y. Okay, chalo, excellent. The Saudi Arabia is a current chair of G20. Okay, and who is the current chair of G7? Who is the current chair of G7? Very good. Okay, so we saw the current chair of G7. Okay, it is a United States of America. See this point. G20 operates without a permanent secretariat or staff. Okay, you should always remember this. Today I am going to share with you the notes. Okay, all the notes which I discussed in our lectures till today. Okay, आज तक जितना भी देखा है हमने वो सारे notes मैं आज आपके साथ share करूंगा. As I already told you, I will share the notes week wise. Okay, and at the end of the month I will share the notes, the entire month, notes of entire month with segregation, like national news, international news, sport news. Okay, days and theme, all these important news, in a segregated manner, in a classified manner, I will share with you at the end of the month. Okay, week wise notes would be mixed, but the monthly notes would be segregated. Okay, that's the one thing that you have to note down. Let's move on. Now G7 group has its root in the wake of which event? When was the G7 established or formed? G7 group was formed after which event? Very good, Ashish. So G7 was formed after 1973 oil crisis. Okay. In order to provide a collective response, okay, to any crisis of this way. Okay. Which group regards itself as a community of values? Which group regards itself as a community of values? Very good. G7 regards itself as a community of values. Now, can somebody tell me whether all the members of G7 are there in the G20? Whether all the members of G7
are there in the G20, or right or wrong? If I say all the members of G7 are also the member of G20, then that statement would be right or wrong? G7 के सारे मेंबर G20 में है क्या? है तो यस बोलो, राइट, नहीं तो नहीं बोलो. नो, यस, नो, यस, यस, यस. So initially I was getting another answers. Yes, they are there. Okay, so we have entire list of G20 countries here in front of us, and now we have to identify the G7 countries out of this. See, whenever you see a developed country, you have to mark it as a G7 country. Okay, developed and as well as big country. Like if you see Brazil, sorry, not Brazil. It's if you see Canada, it is a G7 country. Then if you see European Union, France, Germany, जापान, कौन कौन से कंट्रीज है उसके बाद, और कौन सा आएगा? यूके एंड यूएसए. ओके, हियर यू हैव यूके एंड यूएसए. So I'll show you the G7 countries. Here we have G7 countries. Okay, so it consists of Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. Okay, no European Union. यूरोपियन यूनियन नहीं है इसमें. ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है ये G20 का पार्ट है. ओके, नॉट G7. ओके, चलो ये है क्या? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर G7 कंट्रीज. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रशिया एक्सपेल्ड फ्रॉम G7? Why was Russia expelled from G7 or suspended from G7? Okay, Ashish is saying Crimea issue, Ukraine issue. Okay, okay. Anyone else? Others also do participate into this practice. This is very important. Yes, Russia was expelled from the group of G7 due to its illegal annexation of Crimea. Okay, Russia was expelled or removed from G8 group, after which G8 became G7 due to its annexation of Crimea. Okay, Crimea belongs to which country before Russia's occupation? Which country does Crimea belong to? Yes, Ukraine, right? Ukraine. Now Crimea is located in which sea? Black Sea or Caspian Sea? Very good, very good guys. ठीक है, so location of Crimea is in the Black Sea. ठीक है, I will show you. Yes, this is the Black Sea. Okay, this is the Black Sea and this is the Crimea. Okay, this is the Crimea. Is that clear? And it belongs to Ukraine. It opened up into Black Sea, and this is Sea of Azov. Now who all can tell me which strait connects Sea of Azov to Black Sea? Here we have one strait which connects this Azov Sea to Black Sea. Very good, Shubham. Very good, Arya. Kerch Strait. Okay, very good, excellent, excellent. Okay, चलो. Now next question for you is, see यहाँ पर मैं बता दूँ आपको Kerch Strait. Here we have Kerch Strait. Here we have Sea of Azov between Ukraine and Russia, and here we have Black Sea. Azov Sea is connected to Black Sea through Kerch Strait. याद रहेगा ये सब अभी फिर से, अब इसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा. ठीक है, after this revision. Now let me ask you the next question. AK-47 203 rifles. India had a deal with which country? With which country we had a deal with about AK-47 203 rifles? ठीक है. Yes, not USSR. Why you are using the word USSR? USSR does not exist.
USSR no more exists today. Okay, it was a story of past. It was a story of till 1991. Okay, 1991 तक ही USSR था, उसके बाद नहीं रहा. Okay, अभी उसको हम रशिया कहेंगे. So India had a deal with Russia of AK-47 203 rifles. ठीक है? Yes. So how many rifles we are we are planning to take from Russia? See, the deal is of 7,70,000 rifles. Okay, basically the deal is of 70,70,000 rifles. Out of them, out of 7,70,000, 1 lakh will be imported directly from Russia, and the rest of the 6,70,000 will be manufactured in India under the Make in India program. Clear hai? Clear hai bachcho? Yes, very good. And this is what we call it as a joint venture program. Okay, what we call it as a joint venture. Joint venture means jointly they will produce this particular rifles. Okay, Russia will support India to manufacture these rifles. Okay, so we call it a joint venture between India and Russia. Chalo, next question for you is 1267 sanctions committee comes under which organization? 1267 sanctions committee. 1267 sanction committee comes under which? Very good, United Nations Security Council. Okay, chalo, it has a power to designate an individual as a terrorist, and once an individual is declared a terrorist under this 1267 sanctions committee and sanctions are imposed upon him, then the bank account and the properties of that person will be seized. Okay, and there will be a travel ban on that person. Chalo. UN Security Council consists of how many members? United Nations Security Council consists of how many members? It consists of total. Shlok Rajput, it's 15. Yes, good. So it consists of 15, 5 permanent and 10 not permanent. Very good. Okay, chalo. My next question for you is for today is BRICS. When was the BRICS formed? BRICS stand for which? BRICS का full form बताओ पहले तो. BRICS का full form बताओ. सबसे पहले BRICS का full form बताओ मुझे. Tell me the full form of BRICS first. Yes, so full form of BRICS is Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Okay, out of these 5 countries, okay, out of this, see, BRICS was formed in 2009. Okay, by 4 major emerging economies of the world. Okay, and let me ask you one question: who among these 5 countries is not a founding member of BRICS? Who among the 5 countries is not a founding member of BRICS? Very good, very good, very good, excellent, excellent. See, if we go this way and if you are active this way only, then trust me, you will not find any difficulty in your current affairs portion. Okay, in your examination. This is the best practice which we are doing, and this is the best response which I'm getting from you. I'm very happy for this. Okay, chalo. So South Africa is not a founding member. Why? Because South Africa had joined the group in 2010, and the group was founded in 2009 by Brazil, India, Russia, and China. Okay, the very first meeting of BRICS was held in which country? Very first official meeting of BRICS was held in which country? Very good, guys. Very good. Okay, excellent. Here we have all the answers. Okay, so the first formal summit of BRICS was held in 2009 in Russia. Okay, correctly mentioned. Is that clear now?
ब्रिक्स समझ में आ गया, अब ब्रिक्स को लेकर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। चलो, लेट मी आस्क यू न्यू अनदर क्वेश्चन, एंड दैट इज ease of doing business ranking is given by which organization? I am asking about global organization, ठीक है, global ranking, ease of doing business ranking, ये हुई ना बात। Excellent. So ease of doing business ranking is published and prepared by World Bank. India's latest rank in ease of doing business ranking. India's latest rank in ease of doing business ranking. Are Ashish, listen, Ashish, this is not ease of doing business rank. This is the rank of Global Innovation Index, which you are providing me here. 48 is not a ease of doing business ranking. 48 is the ranking of Global Innovation Index. Okay? चलो, don't get confused between both the things. Ease of doing business का latest ranking जो है इंडिया का वो 63 है, and maximum answers are correct. Okay? Okay, no issues आशीष, no problem. ठीक है? चलो, जो स्टेट का रैंकिंग आया है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है? Which state has topped the ease of doing business ranking state wise? Very good. Andhra Pradesh has topped the ranking. Among union territories, which union territory has topped the ranking? Very good, Ashish. Very fast. Very good. Excellent. Among union territories, it is Delhi. Okay. Is that clear? Chalo, next question for you is International Day of Clean Air for Blue Skies. It is observed on which date? International Day of Clean Air for Blue Skies. It is observed on which date? 7 September. Acha, you guys are not copying now. You guys are you cheating? Have you taken screenshots of yesterday's lecture and you are simply telling me the answer? If you're doing that, then trust me, it won't really benefit you in that matter. Okay? But if you are remembering it and then giving me answer, then that's a very excellent thing. It is indeed a beneficial thing. Okay, and I will request you not to do that. Okay, yeah, yes, you are future officers and you cannot cheat. Very good. Okay, very good. Chalo. So that's why I asked you to listen very attentively in the lecture. Okay, to be very attentive in the lecture, so that you won't really need anything else to see and tell me the answers. If you are very attentive into the lecture itself, then you will be giving me answers without any support. Trust me. Okay, chalo. So next question to you by my side is theme of International Day of Clean Air for Blue Skies. What was the theme? Days कैसे याद करें वो हम लास्ट में प्रॉपर्ली देखेंगे उसको, हमारे रिवीजन बैचेस में हम प्रॉपर्ली उसको देखेंगे. डोंट वरी, अभी जैसा हो रहा है वैसा चलने दो. अभी सिर्फ आप जो मैंने आज पढ़ाया है उसको उसी दूसरे दिन उसके रिवाइज कर लिया करो, आपको वैसे भी याद रह जाएगा. ठीक है, हम वैसे भी रिवाइज कर लेते हैं, आपको वैसे भी याद रहेगा. याद रहने में तकलीफ कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके 6 मंथ का टोटल आपका करंट अफेयर हो चुका होगा और एग्जाम के कुछ दिनों पहले आपको सारे के सारे याद रखने होंगे डेज एंड थीम, तब आपको दिक्कत आएंगी. तब हम हमारे रिवीजन बैचेस में उसको क्लियर कर लेंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट. यस, so theme for 2020 of International Day of Clean Air for Blue Skies is Clean Air for All. Okay, very good guys, very good. And this was the first ever International Day of Clean Air for Blue Skies. Okay, which was celebrated in 2020. है ना, clear है ना ये सब? चलो, let me ask you next and very important question. That International Solar Alliance, it was formed jointly by which two countries? International Solar Alliance was formed jointly by which two countries? Very good. Very good. Very good. Other students, please do participate. Other students, concentrate. At least you concentrate on what is going on into the lecture. Okay. At least participate.
Yes, so I have asked you one question, and that question is which two countries jointly launched the International Solar Alliance? And the answer to this question is India and France. Okay, now next question related to this same topic is International Solar Alliance is that its headquarters is in which country? इतना फास्ट चल रहा है कि मेरे आंसर मेरा जवाब पूछने के पहले आंसर दे दे रहे हैं आप लोग. वेरी गुड. ठीक है, सो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इन हरियाणा, इंडिया. ठीक है, चलो. दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च इन व्हिच समिट एंड इन व्हिच ईयर? वेरी गुड कौस्तुभ पाटिल. Which summit and at which year it was launched? Very good. So it was launched in 2015 during the 21st session of United Nations Climate Change Conference. Okay, जो पेरिस में हुआ था 2015 में, वहां पे हमने इसे लॉन्च किया था. ओके, इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कंप्लीटली बीच में आता है या पार्शियली आता है? इंडिया लाइज partially or completely between tropic of capricorn and tropic of cancer? ये जो स्पेस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, उसमें इंडिया कंप्लीटली आता है या पार्शियली आता है? दैट इज माय क्वेश्चन. ओके, सो पार्शियली आता है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. ओके, वेरी गुड, पार्शियली आता है. जैसे हम अभी देखेंगे, अगर यहाँ पे देखो, दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर, है ना. कंडीशन क्या था पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनने के पहले? कंडीशन क्या था? that country should partially or completely lie between tropic of cancer and tropic of capricorn. And if you can see, India partially lie between tropic of capricorn and tropic of cancer. Why? Because half of the part is above the tropic of cancer. Is that clear? Chalo. And my last question for you for today is, International Literacy Day is observed on which day? अच्छा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमने पढ़ा ही नहीं. चलो आज पढ़ लेते इंटरनेशनल लिटरेसी डे. ओके, लेट्स बिगिन. So, who all can tell me the literacy rate in India as per 2011 census? Who all can tell me first the literacy rate of India as per 2011 census? Okay, so it is something 74%. Okay, right? Very good. Now who all can tell me the male literacy rate in India? Male literacy rate. Okay, so it is something about 82 point something percent, right? And female literacy rate in India, it is okay, it is some 64 point some percent. ठीक है, ठीक है. सो ये है हमारा लिटरेसी रेट. सी, अब यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है, इट इज ऑब्जर्व ऑन 8 सितंबर अक्रॉस द ग्लोब. ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 सितंबर अक्रॉस द ग्लोब एंड इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को. यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, चलो. नहीं, इकोनॉमिक नहीं है, वो एजुकेशनल है. ठीक है, इकोनॉमिक नहीं है, एजुकेशनल है. ओके, इकोनॉमिक नहीं है, एजुकेशनल है. वो कभी कभी बोला जाता है इकोनॉमिक फास्ट बोलते वक्त, बट वो एजुकेशनल है. ठीक है, चलो. टू प्रमोट एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एट स्केल.
See, importance of literacy and skill I have already explained in our previous lecture when I was teaching you at the offline lecture. Do you remember that? In our offline lecture, do you remember we have discussed about we have discussed the importance of what? Importance of what we had discussed? The importance of literacy, right? Importance of literacy and education and the skills. Okay, समझ में आ गया? Now, and that's why in order to accomplish all those goals, International Literacy Day is celebrated all over the world. ठीक है? Sir, we were not there. अच्छा, हम नहीं थे ना sir. अच्छा, where were you then? Okay, see, international literacy means literacy और education का मतलब क्या है कि if you have a educated, well-educated population and a healthy population, then it becomes very productive for that country for its economic development. ठीक है? Because these educated people with well skill, okay, and with well health, they can contribute. They will be more productive than others. Okay, and if that they are productive, they will be able to produce more and more into the economy, and it will help improve our economic growth and GDP. Okay, that's one thing that we need for our economic growth, and also we need educated people for good administration, right? Well skilled people. Yes, US, Japan, Germany, these South Korea, all these are a supreme example of the fact that education and health matters a lot. Okay, so this should be a priority. Now, International Literacy Day 8 September, as I told you, and theme for this year is literacy, teaching, and learning in the COVID-19 crisis and beyond. समझ में आ गया? Literacy, teaching, and learning in the COVID-19 crisis and beyond is the theme of International Literacy Day 2020. Okay, this day was first proclaimed by UNESCO in 1966. Okay, and it was first celebrated in 1967. Okay, याद रहेगा ये. It reminded the international community of the importance of literacy for individual communities and the societies. समझ में आ गया? इसका आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे? Who proclaimed the International Literacy Day? UNESCO. In that case, your answer should be when was the first International Literacy Day was celebrated? 1967 would be answer in that case. And if you ask the theme, then your answer should be this. Okay, clear है? Clear है? चलो आगे बढ़ते हैं. हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कुछ दिनों पहले, जब हम ये सारी चर्चाएं कर रहे थे चीजों का, जब हम RIMC का पहला पेपर डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तब हमने ये सारी चीजें देखी थी. अभी हम RIMC का पहला पेपर डिस्कस पूरा कर चुके हैं, इसीलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं अभी. और आगे बढ़ाते बढ़ाते अब जो है हम नए टॉपिक पर आने वाले हैं. ओके, और वो नया टॉपिक है हमारे लिए NSO सर्वे और लिटरेसी. नाउ दिस इज the notice for online students who were attending my online lectures. Okay, हम सबने जो ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ा था वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे तक ही पढ़ा था. ठीक है, आज से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबके लिए नया होगा. ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हो चुका था, और जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं वो सब रिपीट कर रहा था. ओके, आई वाज रिपीटिंग द सेम टॉपिक व्हिच आई ऑलरेडी टॉट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट्स. ठीक है, which join the lectures later on. Okay, अब जो है अब हम सब एक लेवल पे आ चुके हैं. अब सब जो आज तक हमने पढ़ा अब वो सबका पढ़े जा चुका है. ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर वालों के लिए वो रिवीजन था, और जो लेट ज्वाइन किए हैं और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स थे जो अभी ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वो पूरा नया था. अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि अब इसके बाद हम जो भी देखेंगे वो सबके लिए नया होगा. ठीक है, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. इज दैट क्लियर? और ये लेक्चर, ये कुछ 4-5 न्यूज आइटम पढ़ाने के बाद मैं आपको RIMC का सेकंड पेपर डिस्कशन के लिए लेंगे हम आज. ठीक है, एंड दैट विल आल्सो बी न्यू फॉर एवरीवन. इज दैट क्लियर? सो नाउ ऑनवर्ड्स, अभी इसके बाद अभी से हम जो भी पढ़ेंगे वो सबके लिए नया होगा और सबके लिए सेम होगा. ठीक है, एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन पेपर ऑफ RIMC. देयर वी विल डिस्कस एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस. ओके, इन टुडेज लेक्चर इटसेल्फ. Is that clear?
चलो. So before we move on to the RIMC question paper, let us discuss a few important news items from the month of September. Okay. चलो. Everyone present? Everyone present? I wanted to see this number as 100. Okay. But we are falling short of 7 members. We have 93 members today's lecture. But no problem. देखो ऐसे बोलते ही एक कम हो गया. चलो. So the news item of today's lecture is NSO survey on literacy. ठीक है. देखो हमने जो है नेशनल सर्वे की बात की कुछ मिनट्स पहले अभी. ओके. कुछ मिनट्स पहले ही हमने नेशनल सर्वे की बात की जहाँ पे हमने 2011 के सेंसस के आंकड़े पर बात की थी. ठीक है. मगर अभी जो है एनएसओ जो है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसने 2017 से लेके 2018 के अंदर एक डेटा कलेक्ट किया है, स्टेट वाइज डेटा. ठीक है. स्टेट वाइज लिटरेसी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है. ओके. स्टेट वाइज. और उसके हमारे फाइंडिंग हमारे सामने अभी आए हैं रिसेंटली, जिसके अकॉर्डिंग केरला जो है उसने हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ऑफ 96.2%. okay, so according to the National Statistic Office released its report on household social consumption education in India as part of 75th round of National Sample Survey. ठीक है, ये छोड़ दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है? केरला टॉप्स इंडियाज लिटरेसी रेट चार्ट अगेन. ठीक है. सो केरला वैसे भी काफी लंबे समय से लिटरेसी के मामले में टॉप है. ठीक है. अभी भी मेंटेन है. ठीक है. एंड इट्स लिटरेसी रेट इज एज हाई एज 96.2%, which is way higher than the national average. Okay, so that's a very positive thing, and other states should emulate this thing of Kerala. Right now Delhi has the second best literacy rate of 88.7%. see, as I have already shown you this, that in your human geography topic, demographic based question are asked, and especially among those demographic based questions, the maximum questions are on literacy rate of various states. Okay? And that's why I'm teaching you this particular news, because it was published in September this year. Okay. Very good question कि सर लिटरेट होना मतलब क्या कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए. ठीक है. Now if you see according to this item, ठीक है, you should be able to read and write. ठीक है. You should be able to read and write. Okay. अब ये जो है ना, ये सैंपल जो है रीड एंड राइट वालों का, ये अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज अलग अलग होता है. जैसे अब इस सर्वे के लिए अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या कंडक्ट कर रहा है? दिस प्रोवाइड्स स्टेट वाइज डिटेल ऑफ लिटरेसी रेट अमंग द पर्संस एज्ड 7 years एंड अबव. ठीक है. 7 year एंड अबव एज होना चाहिए, एंड ही शुड बी एबल टू रीड एंड राइट. ओके, समझ में आ गया? यस, वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड. समझ में आ गया आशीष? चलो नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश फीचर्ड एट द बॉटम. सबसे लास्ट में कौन है? सबसे बॉटम में कौन है? आंध्र प्रदेश. उसका लिटरेसी रेट है 66% ओनली. ठीक है. ये नेशनल एवरेज से काफी कम है. ओके. नाउ राजस्थान इज द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मर. ओके. तो अगर आपको देखो, सी, मैंने इतनी जानकारी इसीलिए दी है क्योंकि क्वेश्चन में काफी बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है. ठीक है. कि लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग इन स्टेट्स को अरेंज करो. पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? तो ऐसे में अगर आपको बॉटम के स्टेट पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश सबसे बॉटम में है. आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान आता है. ठीक है. उसके बाद बिहार आएगा और फिर तेलंगाना आएगा. समझ रहे हो? वेरी गुड क्वेश्चन आशीष. आशीष पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे आंध्र प्रदेश इज, Andhra Pradesh has topped in ease of doing business ranking, but it is at the bottom in literacy. Okay, so see,
there is no, like, as you know, no such connection between literacy and ease of doing business ranking. Okay, there is no such connection between literacy and ease of doing business ranking. Well, literacy does help, okay, in business. Literacy does help in business, but literacy does not take business ranking to its highest. See, business ranking के लिए जरूरी क्या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उस कंट्री के, उस स्टेट में गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, ठीक है। अगर किसी कंट्री को, किसी बिजनेसमैन को वहां पर बिजनेस करने जाना है, वहां पर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, तो उसको उस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए कितनी आसानी हो रही है, ठीक है। उस वहां पर कंपनी के लिए उसको लैंड कितनी आसानी से मिल रही है, वहां के लेबर लॉस कितने फेवरेबल है उसके लिए, ठीक है। उसको जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस है वो कितनी आसानी से मिल रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, ठीक है। वहां पर लिटरेसी रेट नहीं देखा जाता। यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर उस स्टेट का गवर्नमेंट इतने अच्छे रूल या लॉज ला रहा है जिससे किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए आसानी हो, उतना इनफ है, ठीक है। लिटरेसी रेट का उससे एज इट इज कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। Ashish, are you getting my point? The parameters are completely different of both the things. Okay. Okay, good. So literacy percentage of Maharashtra I will give you in our notes. Okay. Here I have not mentioned that. Here I have not mentioned. Is there any? No. No. Okay. So now this NSO, you have to read about NSO, that it comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है। NSA कौन से मिनिस्ट्री में आता है ये आपको पूछा जा सकता है, तो in that case you should remember this particular ministry, which is Ministry of Statistics and Program Implementation. See, one more fact which I have got to tell you here, the overall literacy rate they have given, it is 77.7%, ठीक है, 77.7%. Well, we will have an overall literacy rate of 2021 census very soon. Okay, within 1 year we will have another fresh number on our national literacy rate, but according to this NSO survey of 1 year survey, it is 77.7%. Okay, and in rural areas the literacy rate is 73%, whereas in urban areas it is 87%. Okay, so definitely the literacy rate of urban area is higher than that of rural area. Okay, समझ में आ गया? मतलब एनडीए में यही पूछेंगे ऐसा? हाँ, एनडीए में यही पूछेंगे, लेटेस्ट पूछेंगे, डोंट वरी। एनडीए में अगर पूछना भी रहा ना, तो एनडीए में वो मेंशन करते हैं कि which among the following states having largest population according to as per the 2011 census. They specifically mention it in their questions, okay, because they know that various agencies, different agencies do publish different kind of numbers on literacy and population. So in that case NDA trade very cautiously, and they do explain or they do mention specifically that based upon which survey. Okay, so if NDA is going to ask you about this NSO survey, they will specifically mention into their question only that literacy rate in India as per the latest NSO survey is, or literacy rate in India as per the 2011 census is. This way they will specifically mention. Okay, you need not to worry about that. Is that clear? Clear hai for everyone? Everyone, about 90 plus students are present, and I'm getting a response from only 10 to 12 students. This is not fair. This is not fair. Everyone should cooperate. Everyone should show their activism into the chat box. Well, restricted to studies only. Okay, do not show your activism in extracurricular here as of now. Sure. Next is about PM SVANidhi. Okay, next what we are going to discuss is PM SVANidhi. Okay, let me explain this. PM SVANidhi जो है आपको एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि SVANidhi sounds good. Okay, and the words which sounds good, UPSC is very fond of such kind of words, and there are high chances of asking such questions. Okay,
सो पीएम स्वनिधि, अब ये क्या है, आपको इस पर सवाल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। सवाल कैसा आ सकता है इसको आपके इसके ऊपर कि वह पीएम स्वनिधि जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, आपको किस सेक्टर से रिलेटेड है ऐसा पूछा सकता है, या फिर किस सेक्शन से रिलेटेड है, ये स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, या ये फार्मर से रिलेटेड है, या ये इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड है, ऐसा सवाल आ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड है, ठीक है। पीएम स्वनिधि का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इट मींस पीएम स्वनिधि स्कीम। नाउ अब ये पीएम स्वनिधि क्या है, किसके लिए लाई गई थी? सर वी हैव टू मेक नोट्स और यू विल प्रोवाइड, अरे आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, टुडे आई विल शेयर नोट्स इनटू आवर ग्रुप, ओके, notes of all the topics that we have discussed so far, notes of all the topics that we have discussed till today will be shared in your group today itself, okay, most probably by the evening I will share it, okay. You need not to note down many points, you have to note down only those points where I explicitly mentioned that you have to note it down. When I say note down the point, then only you have to note down, otherwise no need to note down. I have already provided you much of the important points are in our notes itself, okay. Chalo. Now PM Swanidhi, we were talking about PM Swanidhi we were discussing about, okay. See, due to COVID-19 and the subsequent lockdown, what had happened is that all the street vendors, okay, they lost their job. Why? Because there was a lockdown and they were not able to freely move into the lanes, freely move into the areas and sell their sabji. So that's why it impacted them very badly, okay, it impacted them very badly, and that's why उन सबके बिजनेस जो है सबके ठप हो गए थे, ठीक है। अब ऐसे लोगों को रिलीफ देने के लिए, अब उनके बिजनेस चल नहीं रहते थे, उनके पास अब फिर से बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल नहीं थी, ठीक है, फिर से बिजनेस शुरू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के पास इतनी कोई सेविंग होती नहीं है बेचारों के पास, ठीक है। और डेफिनेटली उनको जो है लोन प्रोवाइड करने का काम अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम करेगा, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या करेगा, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। अप टू 10,000 लोन विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल अंडर दिस स्कीम, ओके, पीएम स्वनिधि में। समझ में आ रहा है? जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी टेक प्रेजेंटी शीट ऑफ योर टुडेज लेक्चर, जस्ट अ मिनट। जैसे मैंने प्रेजेंटी की बात की, 2 लोग भाग गए इसमें से, ऐसे थोड़ी ना चलता है। Okay, no problem. No problem. Chalo. So the scheme was basically here. If you can read, the scheme was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है, सी मिनिस्ट्री भी पूछते हैं, आपको अगर पता होगा कि एनडीए में जो एग्जामिनेशन में हम सवाल देखते हैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स पर, उसमें मिनिस्ट्री भी पूछा जाता है, ठीक है। सो द पीएम स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। इट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब हमारे जो सब्जी वाले होते हैं, हम इनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, to resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown, as I already told you. Okay, so under this scheme, loans up to 10,000 to street vendors will be provided. Okay, and the scheme targets 50 lakh beneficiaries. ठीक है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचने का टारगेट है इस पीएम स्वनिधि स्कीम का, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इज सिडबी। सिडबी आपको पता है, सिडबी का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा मुझे? Who all can tell me the full form of SIDBI? SIDBI का full form?
full form of SIDBI are a small industrial development bank of India. Okay, SIDBI means small industrial development bank of India. Okay, it is the implementation agency of PM स्वनिधि scheme. समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? PM स्वनिधि किसी को समझा नहीं हो? PM स्वनिधि पर सवाल आता है अगर आपका मिनिस्ट्री पूछा जाता है, टारगेटेड ग्रुप पूछा जाता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछा जाता है या मिनिस्ट्री पूछा जाता है, आपको सारे आंसर्स अभी आने चाहिए. ठीक है? यस, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. वेरी गुड स्टूडेंट. हाँ सर, एक बार और. अच्छा, एक बार और बताओ. देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको. कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था कि हमारे जो ठेले वाले हैं या हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, सब्जी वाले जो है, इनका लॉकडाउन की वजह से गलियों में जो वो आते हैं, रास्तों पर जो वो अपनी सब्जियां बेचते हैं, ठीक है, या फिर बाकी जो अपने आइटम बेचते हैं, वो उनका सब बंद हो चुका था ड्यू टू लॉकडाउन, है ना. दे वर नॉट एबल टू फ्रीली मूव, है ना. वो एक जगह से दूसरी जगह जाना लॉकडाउन की वजह से, कहीं कंटेनमेंट जोन है, कहीं लॉकडाउन स्ट्रिक्ट है, सो वो नहीं कर पा रहे थे. जैसे काफी लोगों का जॉब गया है, उनका भी जॉब चला गया था. ठीक है, मगर उनके पास फिर से उनको वो जॉब स्टार्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल, मतलब उनको फिर से जॉब शुरू करने के लिए क्या करना होगा, उनको गाड़ी की जरूरत होगी, उनको सब्जी का जो होलसेलर से माल लेते हैं उसकी जरूरत, उसको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी. तो ये सारे के लिए उनको लोन मिलेगा अंडर दिस पीएम स्वनिधि स्कीम. ठीक है, और लोन मिलेगा अप टू 10,000. ये लोन लेकर वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, और यही है पीएम स्वनिधि स्कीम. और ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर रहा है. समझ में आ गया? इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है? इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो है ये सिडबी है. अब समझा? मल्हार, Malhar, did you get the point now? Yes. Shall we move on then? Chalo. We will see the next question. Okay. Next is Indira Gandhi Peace Prize 2019. Very important point from your exam point of view. Okay. This coming examination, it is very important. Which one? Indira Gandhi Peace Prize for 2019. So the basically Indira Gandhi Peace Prize किसको मिला है 2019 का? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है that this prize has been awarded to David Attenborough. ठीक है, Indira Gandhi Peace Prize is awarded to David. अब ये डेविड कौन है? डेविड है एक नेचुरलिस्ट. ठीक है, डेविड है एक नेचुरलिस्ट. उसको क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टू नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, अब जो नेचुरल वर्ल्ड्स के वंडर्स क्या है और हम नेचर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस पर वो बहुत काम करते हैं. ठीक है, कौन? डेविड एटनबर्ग बहुत काम करते हैं और उनके इसी काम के लिए उनको इंदिरा गांधी का पीस प्राइज मिला है फॉर 2019. For you question will be very simple, that Indira Gandhi Peace Prize for 2019 is awarded to whom? ठीक है, so it is awarded to David Attenborough. You should remember this because he is a renowned naturalist and English broadcaster. ठीक है, he is a renowned naturalist and English broadcaster. समझ में आ गया? और जिस जूरी ने, जिस कमिटी ने इनका नाम सिलेक्ट किया है, उस कमिटी को चेयर कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, who is no longer, ठीक है, with us now. Getting my point? इनको जिसने अवार्ड दिया, वो अवार्ड सिलेक्ट करने वाली जो कमिटी थी, उस कमिटी को चेयर कौन कर रहे थे? प्रणब मुखर्जी. ओके, और ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये कौन देता है? इट इज गिवन बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से दिया जाता है सिंस 1986 से दिया जा रहा है इस अवार्ड को. ठीक है, ये इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है, याद रखो. ठीक है, इंडिविजुअल को भी मिल सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है. समझ में आ गया? डेविड वाज सिलेक्टेड फॉर स्पेंडिंग हिज लाइफ रिवीलिंग द वंडर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड.
ओके। और ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वर्ड्स के वंडर बताने वाले या फिर नेचर को प्रिजर्व करने वाले या फिर एनवायरमेंटलिस्ट या फिर नेचुरलिस्ट को नहीं मिलता। ये उनके अलावा भी और भी लोगों को मिल सकता है हु इज वर्किंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल पीस और डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले लोगों को भी ये मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिड यू गेट द पॉइंट स्टूडेंट्स? आर यू विथ मी? चलो, now let's move on to the next topic. Okay, इंदिरा गांधी कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के? द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, and when was she assassinated, sorry, when was she assassinated? श्रेयस गायकवाड़, आपने 1982 से 87 क्या बोला है? 87 में कौन आया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का डेथ 1984 में हो चुका था। She was assassinated by her bodyguards. Yes, very good. So 1966 to 1977, अरे उसके बाद भी थे वो, 1984 तक थे। ठीक है, इंदिरा गांधी 1984 तक थे, समझ में आ गया? 74 में भी थे वो। इंदिरा गांधी का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में और इंडिया के काफी सारे मल्टीपल इवेंट्स में। जैसे 1962 का 1971 में जो वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान का, ठीक है, 1971 में जो वॉर हुआ था उस वक्त काफी बड़ा सबक सिखाया था पाकिस्तान को इंडिया ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। समझ रहे हो? इंदिरा गांधी तब लीडर थे हमारे देश के। समझ में आ गया? इसके अलावा जो हमारा पोखरण टेस्ट हुआ था सबसे पहला, ठीक है, वो भी इंदिरा गांधी के लीडरशिप के अंडर ही हुआ था। यस, इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी के वक्त हुई थी। वेरी गुड। ठीक है, सो शी वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। एनीवे, शी हैज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ। ठीक है, बट वी विल रिमेंबर हर फॉर हर गुड कंट्रीब्यूशंस। ओके, चलो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, सी government schemes for you as such are not that important, but they are important certainly for two things. Either they will ask you the purpose of the scheme, and or they will ask you the ministry of the scheme. Okay, these two things are very important. Even though you do not read in the entire scheme in much depth, you have to at least remember the purpose of the scheme and the ministry of the scheme. Okay, under which ministry the scheme is being implemented, that you must remember these two things at least. Okay, so we are going to cover all the important schemes of our government of India, okay, which was brought into the picture during these last 6 months, and we will look after their aim and their ministry. Okay, chalo, so the next scheme for us is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So as the name itself suggests, it is targeted for fisheries. ठीक है, fisheries. Its aim is, so Prime Minister Modi launched this Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana as the part of Atmanirbhar Bharat package. ठीक है, हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जब वो सारे वो ट्रेंचेस लॉन्च कर रहे थे, उसमें ये एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। ठीक है, एंड इट्स एम इज टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन, है ना। ब्लू रेवोल्यूशन क्यों कहा है इसको? व्हाई वाज द ब्लू वर्ड इज यूज्ड हियर? कौन बताएगा मुझे? व्हाई वाज द ब्लू वर्ड इज यूज्ड हियर? ब्लू रेवोल्यूशन हम किसे कहेंगे? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड मल्हार. Okay, because it is related to water. Okay, and the color of the water, at least into the ocean, appears to be blue.
right? Chalo, so that's why blue revolution. So whenever we talk about blue revolution, in that case our maximum focus would be on either water or fisheries. Okay, समझ में आ गया? तो ये terminologies याद रखना. Now through sustainable and responsible development of fishery sector in India. So fishery sector का हमें जो है sustainable development करना है. See हमें fishery sector पे क्यों इतना focus करना है? Because fisheries and aquaculture are an important source of food, nutrition, employment and income in India for many. अगर आप हमारे कोस्टल स्टेट्स देखेंगे इंडिया के, साउथ इंडिया के स्पेशली, उसमें मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है कोस्टल सिटीज के या कोस्टल विलेजेस के, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द फिशरी सेक्टर. ओके, their food, their livelihood, their employment, all is dependent on the fisheries. Okay, and that's why we are aiming to bring blue revolution and sustainable development into the fishery sector, so that the food problems of those people would be solved and they will have a better employment opportunities. Okay, as soon as the sector expands, people will get employment and better food and nutrition. Is that clear? Are you getting my point, guys? ये इतने बड़े बड़े आप गूगल से लाके दे देते हो यहाँ पे मुझे. See, when I'm teaching you, you have to first only concentrate on what I'm teaching you. Okay, you go to Google, you search something, meanwhile you miss many things which I'm explaining about the scheme. So first you have to only concentrate on the lecture, listen carefully to what I'm telling you. Okay, and hereafter once the lecture ends, you can Google it. Okay, Google anything, but at least listen to me carefully. आपको जो मैं स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ ना, क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस ज्यादा है. आप जो गूगल पर सर्च कर रहे हो ना, वहां से नहीं. इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस. आप गूगल पर सर्च करते हो, you strive for extra knowledge, additional knowledge, that is good thing. I'm not against it, you do it, but at least when I'm teaching you, you concentrate on what I'm telling you. Okay, is that clear? क्योंकि सवाल यहाँ से आने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर के जो मैंने पढ़ाया है, ये जो मैं नोट्स में पढ़ा रहा था, ये जो आपके सामने है, वही से सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए. इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया. Okay, so in that case, for that, at least for that matter, you need not to search anything beyond this. But even still, if you want to do that for your extra knowledge, for enhancement of your knowledge base, you can do it, but at least listen to me carefully. Okay guys, chalo. Now, yes, as I already told you, the sector provides livelihood to more than 20 million fishers and fish farmers at the primary level and twice the number along the value chain. देखो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखोगे, फिशरी सेक्टर हमारे देश में लगभग 2 करोड़ लोगों को मिलता है ड्यू टू फिशरी सेक्टर. ठीक है, और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे फिशरीज को पकड़ने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन कराना है, उसको शॉप्स तक ले जाना है, उसके पैकेजिंग में और कोई चीजें लगती है, ये सब बाकी के जो उसके पूरे वैल्यू चेन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसमें भी काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है, सो 2 करोड़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लगभग 3 से 4 करोड़ indirect employment मिलता है due to fishery sector in India, and that's why it becomes very important for us to develop our fishery sector so that more and more people would be benefited from this. Okay, समझ में आ गया? चलो, let's move on. So are we done first 1 hour? Okay, we have done first 1 hour and we will move on to our RIMC question paper. Sir, last point please repeat. Acha, last point what I was telling you, the sector provides livelihood to more than 20 million fishers. Okay, so basically जो फिशरी सेक्टर है हमारे देश में, फिशरी सेक्टर है मतलब बेसिकली मछुआरों का जो सेक्टर है, मतलब जहाँ पे लोग मछलियां पकड़ते हैं, वहां पे फिशिंग करते हैं, तो उसके बाद उसको बेचना है, लोगों को फूड कंज्यूम भी करते हैं काफी सारे जगहों पे. Especially I'm talking about the southern Indian states because South India share a very long coastal line with coastal border with Indian Ocean.
तो ऐसे टोटल अगर आप देखोगे तो लगभग 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन फिशर्स का जो लाइवलीहुड है वो फिशरी सेक्टर से आता है, ठीक है, फिशरी सेक्टर से आता है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता है। मतलब मतलब ये था इस केस में कि जो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहे हैं मतलब फिशिंग करके जो डायरेक्ट बेनिफिट जिनको मिल रहा है वो 2 लाख है, मगर उसके अलावा फिशिंग करने के बाद अब वो फिशर्स ने क्या किया, फिशिंग किया, फिशरी जो है पकड़ी अपनी, ठीक है, उसके बाद उनको वो फिशेस जो है मार्केट तक पहुंचाने हैं। तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की उनको जरूरत पड़ेगी, उसको प्रॉपर पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग सर्विसेज की उनको जरूरत पड़ेगी। तो ये अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रहे हैं ना उसकी वजह से पूरे वैल्यू चेन में, है ना। आप सिर्फ फिशरीज को पकड़ते नहीं है, उसके बाद आप उसको पैकेट करोगे, उसका पैकेजिंग सर्विसेज के लोग उसको जरूरत पड़ेंगी, पैकेजिंग सर्विसेज के जितने भी मटेरियल है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो मटेरियल बनाने वाली कंपनी को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैकेजिंग सर्विसेज वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे। तो ऐसे बाकी लोगों को भी इससे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली मिल जाता है। सो दैट वाज आई वाज सेइंग देयर। मल्हा, डिड यू गेट दैट? सर ये टोटल कितना पैकेज है? हाँ, ओके, मल्हार गॉट द पॉइंट। नाउ आशीष हैज आस्क्ड सर ये टोटल कितना पैकेज है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ पैकेज ऑफ अराउंड 20,000 crore, ठीक है। So this is a package of around 20,000 crore, and this scheme will be implemented for a 5-year term. Okay, this scheme will be implemented for a 5-year term. Is that clear? समझ आ गया? From 2020-21 to 2024-25. Okay, clear everyone now? Everyone? FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। हमारे फाइनेंशियल ईयर हम ऐसे काउंट करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर 2021 22 2022 23, फाइनेंशियल ईयर 2018 19, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड टू 2 इयर्स, है ना। मार्च से शुरू होता है एक साल के और अप्रैल में खत्म होता है दूसरे साल के, सॉरी अप्रैल से शुरू होता है पहले साल के और मार्च में खत्म होता है दूसरे साल के। सो ये 2 साल तक मतलब बेसिकली पूरा साल एक ही साल रहता है टाइम पीरियड, मगर 2 साल में एक्सटेंड होता है, इसलिए हम उसको ऐसे 2 साल के तौर पे लेते हैं। समझ में आ गया? फाइनेंशियल ईयर। हाँ, एजुकेशनल ईयर जैसा, वेरी गुड, ठीक है, वैसे फाइनेंशियल ईयर भी होता है। ग्रेट, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, व्हाट इज द न्यूज नेक्स्ट? ईस्ट एशिया समिट जो है हम कल डिस्कस करेंगे, उसके पहले में अभी हम कुछ और डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज आवर RIMC क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलो, सो दिस इज द सेकंड RIMC क्वेश्चन पेपर। यस, सो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम बजट अनाउंस करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम हमारा बजट जो है फरवरी में अनाउंस कर देते हैं, लगभग फरवरी में अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगला जो मंथ आएगा वो मार्च आने वाला रहता है। फाइनेंशियल ईयर का इंपॉर्टेंट मंथ होता है जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है, ठीक है। चलो, और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला होता है। सो फरवरी का जो बजट आता है हमारा वो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है, ठीक है। चलो, let's discuss the questions from this RIMC paper. Okay, आपको 2 मिनट के लिए पानी वानी पीना है तो पी सकते हैं। मैं भी पी लेता हूँ। Okay, let's start again. Now, the very first question is, the National Farmers Day is celebrated on which date? Chalo, now let's participate into this practice. I want answers from everyone. This should be a very active session wherein you will participate more. So नेशनल फार्मर्स डे, इसको हम किसान दिवस भी कहते हैं,
ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ओके, सो मेनी ऑफ यू आर गिविंग मी ऑप्शन डी, इट्स 23rd दिसंबर। याद रहेगा 23rd दिसंबर आपको वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, क्योंकि दिसंबर आपके 6 मंथ टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, जब हम दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब हम नेशनल फार्मर्स डे वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, और हम दिसंबर में जाकर ये भी देखेंगे कि दिसंबर इस साल के नेशनल फार्मर्स डे का थीम क्या था, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो उसके लिए अभी आपको वेट करना होगा। चलो, सो 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ किसान दिवस। ओके, समझ में आ गया? ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे चौधरी चरण सिंह, इनका बर्थडे आता था इस दिन। ठीक है, 23 दिसंबर इज अ बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, बिकॉज व्हाई? because he introduced many policies to improve the lives of Indian farmers, and that's why his birthday is commemorated as National Farmers Day. क्लियर है? चलो, जब हम दिसंबर में देखेंगे तब डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी के लिए बस इतना ही याद रखो। Now give me the answer of second question. Which Indian mountaineer has become the world's first female amputee to scale Antarctica's highest peak? Yes. Okay. Anyone else? Fast. अरे इतने कम लोग कैसे आंसर दे रहे हैं? आप आंसर खुद दोगे ना तो आपको याद आएगा। देखो, आंसर देने का वो फायदा होता है, हमेशा याद रखना। If you give answers, you will remember it. Even he has scaled Mount Everest also. Okay, very good. ठीक है, so answer to the question number 2 is Arunima Sinha. ठीक है, Arunima Sinha. She became the first female amputee to climb the Mount Vinson, the highest peak of Antarctica. समझ में आ रहा है? She has also climbed Mount Everest. ठीक है, in 2013. समझ में आ रहा है आपको? अरुणिमा जो है हमारी वॉलीबॉल प्लेयर थी, फॉर्मर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। समझ में आ गया? एंड नाउ शी हैज टर्न एज अ माउंटेनियर। नाउ शी इज अ माउंटेनियर, अर्लियर शी वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। याद रहेगा? ठीक है, हाँ, माउंट विंसन याद रखो, माउंट विंसन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माउंट विंसन लिख लो। ये जो हाईएस्ट पीक अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं ना, वो माउंट विंसन है। ओके, याद रहेगा? ये नोट डाउन कर लो, जैसे अभी मैंने बोला नोट डाउन कर लो, तो ये नोट डाउन कर लो। अंटार्कटिका's हाईएस्ट पीक इज माउंट विंसन। ओके, इसको उसने क्लाइम किया है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्वेश्चन पेपर इज क्वेश्चन नंबर 3। Which country has won 2019 Asian Cup football tournament? Yes. Very good. Very good. So Qatar has won the Asian Cup of football tournament for 2019. Okay, कतर। समझ में आ गया? और किसको हराया कतर ने इस मैच में? फाइनल में किसको हराया कतर ने? रनर अप कौन था इस फुटबॉल टूर्नामेंट में एशिया कप के? वेरी गुड, जापान। ओके, सो कतर won the 2019 फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया कप by defeating जापान। ओके, जापान ऑलरेडी काफी बार चैंपियन रह चुका है एशिया कप का, और एशिया कप के चैंपियन को काफी बार जो रह चुका है उसको कतर ने हराया है by 3-1।
ठीक है, चलो वेरी गुड पॉइंट, very good for Qatar because it is going to hold the next World Cup of football in 2022 and that's a positive news for Qatar. Chalo. Now give me the answer of question number 4. Which of the following cricket team has clinched 2019 Ranji Trophy? किसको मिला रणजी ट्रॉफी 2019 का? अच्छा, ओके, क्या पूछा है इन्होंने? क्लिंच्ड का मतलब, क्लिंच्ड मीन्स हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन से अचीव्ड. ठीक है, म्हणजे आप मराठी में जो बोलते हैं ना पटकवले, ठीक है, यानी हे पदक पटकवले, इन्होंने ये पदक हासिल किया, मतलब हासिल करना, अचीव करना, क्लिंच्ड. ओके, टू होल्ड, टू टाइट ऑन. और इसका नॉर्मल मीनिंग होता है होल्ड इन अ टाइट ग्रास्प. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ चलो नेक्स्ट. क्या क्या बोला आपने जवाब? सी योर आंसर आर डिवाइडेड ऑन विदर्भा एंड सौराष्ट्र. ठीक है, सो 2019 का अगर रणजी ट्रॉफी बोल रहे होंगे वो 2019-20 का, सो इट वाज सौराष्ट्र. ठीक है, 2018-19 का जो था, ठीक है, 2018-19 का जो था वो था विदर्भा. समझ में आ गया? 2019-20 का कौन था? सौराष्ट्र. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज who authored the book Undaunted, Saving the Idea of India? Okay, Undaunted, Saving the Idea of India. This book was published by whom? It means they have asked the author. किसने लिखी है बुक? बता रहा है कोई मुझे आंसर में? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आंसर इज पी चिदम्बरम. ओके, याद रखो, अनडाउंटेड, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा है? पी चिदम्बरम ने लिखा है. अनडाउंटेड मीन्स अनशेकन. ठीक है, अनशेकन मतलब अब तक जो हम जिसकी सूरत बदल नहीं सके, जो जिसको हम हिला नहीं सकते, ऐसी जो आइडिया की इंडिया की आइडिया है उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है, अनडाउंटेड मीन्स अनशेकन. समझ में आ गया? चलो. संजीता चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? संजीता चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन बता रहा है मुझे ये? वेरी गुड. सो हियर यू आर वेरी फास्ट. ठीक है, संजीता चानू इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग. Okay, she is a very famous weightlifter of India. She belongs to which state? She belongs to which state? Sanjita Chanu belongs to which state? Can somebody tell me? She was born in which state? Sanjita Chanu was born in which state? Sanjita Chanu was born in Manipur. ठीक है, मणिपुर.
and not Assam. Sanjita Chanu was born in Manipur and not Assam. Okay. See, she is very famous. Why? Because she is a two-time Commonwealth Game champion. Okay. She has won Commonwealth Games for 2 times in her weightlifting. Okay. लिख लो यहाँ पे इसको पॉइंट नोट डाउन करो इस पॉइंट को. संजीता चानू born in Manipur is a two-time Commonwealth Games champion. ऐसे लिखो, संजीता चानू born in Manipur is a two-time Commonwealth Games champion in weightlifting. ठीक है. कैसा लिखना है आपको स्टेटमेंट? संजीता चानू, अरे मेरे को ये क्लियर करने दो. संजीता चानू born in Manipur is a two-time Commonwealth Games champion in weightlifting. फाइन, लिख दिया है तो आंसर याद रखना डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 कौन अटेंड कर रहा है? ये वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, बट यू कैन अप्लाई योर मैथ स्किल्स हियर, योर न्यूमेरिक स्किल्स हियर. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? ओके, someone are saying 51, some are saying 56. ठीक है, चलो ये आप आपके मैथ्स की क्लास में पढ़ते ही रहेंगे. राइट. नेक्स्ट, अभी बेसिकली अगर आपको बताना है तो ये क्या है? इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, if you see the difference between 6 and 11 is of 5. Difference between 11 and 21 is of 10. Difference between 21 and 36 is 15. तो ऑब्वियस है अब 36 और आगे जो भी आएगा यहाँ पर उसका डिफरेंस कितना रहेगा? 5 से बढ़ रहा है, 20 रहना चाहिए. ठीक है. सो पहले में डिफरेंस 5 का है, दूसरे में 10 का है, इन दोनों में 15 का है, तो इन दोनों में कितना का रहना चाहिए? 20 का. अब 36 में 20 मिला दोगे तो आप कितना बन जाएगा आपको? 56. ठीक है. और आप 56 और 81 में कितने का डिफरेंस रहना चाहिए? 25 का. है क्या? देख लो. देन योर आंसर वुड बी करेक्ट. इज दैट क्लियर? डिड यू गेट दैट? चलो मूव ऑन. फिर से अभी ये सारे वैसे क्वेश्चन है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो. Which paramilitary force on March 3, 2019 has made history by creating a Guinness World Record in a single line bicycle parade to mark 50 years of its rising? Which paramilitary force? कौन सा है ये? किसके बारे में बात हो रही है? कौन बताएगा? Who all can tell me the answer to this question? अभी तक एक भी नहीं. Okay, so answer is B. Let me tell you. Very good, Tharva. Okay, CISF is the answer. Okay, so basically CISF created history by achieving a Guinness World Record feat in single line bicycle parade to mark the 50 years of paramilitary force. Okay, the Central Industrial Security Force. CISF का full form क्या है? Central Industrial Security Force. और ये कब आई थी? When was it raised? It was raised in 1969. Okay, it was raised in 1969. ठीक है. और इसीलिए 2019 में अगर आप देखोगे तो इसको कितने ईयर कंप्लीट हो रहे हैं? 50 years of its raising, because it was raised in 1969. है ना? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? चलो. सो फोर्सेस लाइक BSF, यहाँ पे BSF दिया हुआ है, ITPB दिया हुआ है, CRPF दिया हुआ है. ठीक है. सो BSF, CRPF, ITPB,
SSB, ये जितने भी है ये सारा कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? ये सारे फोर्सेस कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं बच्चों? अंडर विच मिनिस्ट्री दिस फोर्सेस कम? I knew it. Your answer would be divided on this. बताओ, होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री? CRPF, CISF, BSF, ITBP कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, ये सारे जो हमारे इंटरनल फोर्सेस है ये सारे हमारे सारे होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ठीक है, फॉर और इंटरनल सिक्योरिटी। और जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है, विच सिक्योर आवर बॉर्डर, आवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। ये CISF, BSF जो भी है हम हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर जाती है। जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है बॉर्डर्स की वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जाती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, so CISF is basically responsible for securing industrial establishment like airports, metros and all this, ठीक है। आप मेट्रो पर एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहां पे जो आपको फोर्सेस मिलेगी वो होती है CISF फोर्स, ठीक है। और उसके बाद सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करेंगे हम, SSB कहां पर होती है, किसके बॉर्डर पे होती है SSB? सशस्त्र सीमा बल जो है हमारा SSB, they are deployed on which border? I mean border of which country? With which country? Which country's border? अरे ऐसे कैसे, SSB आप कैसे भूल गए? कौन सी बॉर्डर को, कौन से देश के बॉर्डर के बीच में और हमारे बीच में ये SSB रहती है? ओके अथर्व, वेरी गुड, इंडो नेपाल। इंडो नेपाल बोलने से बेहतर है आप ये बोलो नेपाल एंड भूटान, ठीक है। सो सशस्त्र सीमा बल दैट मींस SSB, दे आर रिस्पांसिबल फॉर नेपाल एंड भूटान बॉर्डर। नोट डाउन दिस वर्ड, SSB responsible for Nepal and Bhutan border. Okay, Nepal and Bhutan border. Not able to properly write, but you note it down. SSB responsible for Nepal and Bhutan border. Then Indo-Tibetan border police. Indo-Tibetan border police, ये ITBP जो देख रहे हैं आप ऑप्शन सी में, ठीक है। It is responsible for guarding which border? I mean border with which country? यस, नाम में पता चल जाता है, टिबेट विच मींस चाइना, ठीक है। हमारा जो चाइना के साथ ईस्टर्न बॉर्डर है सारा, उसको प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? ITBP के पास। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनफ डिस्कशन हैड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ एसैट मिसाइल सिस्टम दैट इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन मार्च 27, 2019? क्या है नाम इस मिसाइल सिस्टम का, एसेट का? एसेट मिसाइल सिस्टम जब हमने टेस्ट की थी तो वो जो मिशन था उसको कौन सा मिशन बोला गया था? ये मैंने हमारे पिछले बैच में पढ़ाया भी है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एंटायर न्यूज एंड दिस मिशन एंड एसैट इन आवर प्रीवियस बैच। कौन बता रहा है? Give me answer for question number 10, guys.
Yes, Atharva Mohite. Yes, I got one answer, and that is the only answer out of how many? 84 students present. That's very negligible number. Now Ashish has given me the answer, Mission Shakti. Anyone else having different answer? किसी के पास कोई अलग आंसर है इसका? नो, चलो कोई बात नहीं. सो एसेट जो है, एसेट मींस एंटी सैटेलाइट. ठीक है, एसेट मींस एंटी सैटेलाइट. ओके, एसेट मींस एंटी सैटेलाइट. सो इंडिया बेसिकली शोकेस इट्स एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल कैपेबिलिटी ड्यूरिंग इट्स 21st रिपब्लिक डे परेड लास्ट ईयर. ठीक है, 2019 का जो हमारा 21st रिपब्लिक डे परेड था, उसमें इंडिया ने ये एसेट को शोकेस किया था. ठीक है, इंडिया हैड conducted its first ASAT missile test in March 2019. Okay, and it has successfully destroyed a low Earth orbit satellite in space by using a missile which covered a distance of 300 kilometers to engage the target. Now, this testing of ASAT is codenamed as Mission Shakti. Okay, as you can see in the option B, this testing of ASAT was codenamed as a Mission Shakti. So basically what ASAT do, तो उसके नाम में लिखा है एंटी सैटेलाइट. मतलब अगर हमारे कंट्री को कोई सस्पिशन आता है कि हमारे कंट्री के ऊपर जो हमारा जो एयर स्पेस है, यहाँ से कोई ऐसा अननोन सैटेलाइट गुजर रहा है जो हमारे कंट्री का नहीं है, वो एनिमी कंट्री का हो सकता है, इन ऑर्डर टू कीप वॉच ऑन आवर कंट्री, सो इन दैट केस आवर कंट्री कैन डिस्ट्रॉय दैट सैटेलाइट बाय यूजिंग दिस एसैट मिसाइल. इसीलिए इसको बोल रहे कि एंटी सैटेलाइट मतलब it will be used to destroy the enemy satellite over our airspace. Are you getting my point? So basically ASAT is a missile that can destroy or jam an enemy country's satellite in our space. Did you get that? Did you get the meaning of ASAT? Yes, no, yes, no. Say something. Yes, you got it. Okay. चलो, सो वो है एसैट. और ये जो एसैट का टेस्ट किया था हमने, ये टेस्ट हमने किया था, जो टेस्ट किया था उसको हमने उस मिशन को नाम दिया था मिशन शक्ति. ठीक है, वही पूछा गया है एग्जामिनेशन में. ये ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस बैच में डिस्कस भी कर चुके हैं. सो विद दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ एसैट, इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज दिस काइंड ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ओके, which can destroy an enemy satellite after its launch in our airspace. Now, which other 3 countries having this same technology which can destroy enemy satellite? They are obviously US, Russia and China. ठीक है, US, Russia and China. Only these 3 countries have this capability of destroying enemy satellite. Okay, यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया 4th कंट्री बना है. टोटल 4th है ना, फिर इंडिया अगर 4th कंट्री बना है तो एटलीस्ट 2019 तक 4th है. उसके बाद कोई इन्वेंशन हुआ है तो वो हमारे न्यूज में आ ही जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज द लाइट ऑफ डिस्टिंक्ट स्टार्स इज अफेक्टेड बाय. अभी आपके सारे ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन है दैट वी विल नॉट डिस्कस. ओके, बट इसका आंसर एटमॉस्फेयर और इंटरस्टेलर डिस्टेंस जो होता है, ये दोनों होना चाहिए वैसे. ठीक है, बट यू डिस्कस इट विथ योर फिजिक्स टीचर एटलीस्ट. ठीक है, नाउ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन व्हाट. ये भी आपका ज्योग्राफी और फिजिक्स का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का बेसिकली. सो ह्यूमिडिटी जो है किस पर डिपेंड होती है, तो ये आप कह सकते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड हो सकती है, लोकेशन पे भी और वेदर पे भी. मगर इन्होंने ऑल ऑफ द अबव देने की बजाय यहाँ पर नन ऑफ द अबव दिया है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट टेम्परेचर तो मेन फैक्टर ही है.
लोकेशन इज आल्सो मैटर्स एंड द वेदर आल्सो मैटर्स, ठीक है। सो अगर ये none of these अगर इनका सही है तो इन दैट केस योर आंसर शुड बी टेम्परेचर, बट आई फाउंड इट mistake. I think there is a mistake. They should have provided all of the above, ठीक है, but okay, we need to check it. Okay, chalo next. You ask to your geography teacher this question. Okay, he will correct it basically, but for me all the options should be correct. Now let's move on to next question. The southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari. See, they have explicitly mentioned peninsular India. Why? क्योंकि अगर वो सिर्फ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहते तो वो कन्याकुमारी है क्या? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर इंडियन टेरिटरी, इज इट कन्याकुमारी? यस, इंदिरा पॉइंट, राइट। इंदिरा पॉइंट कहां पे है? इंदिरा पॉइंट किधर है? तमिलनाडु में इंदिरा पॉइंट है? आर यू श्योर? इंदिरा पॉइंट किधर है? वेरी गुड अथर्व, ठीक है। अंडमान निकोबार का हमारा जो निकोबार है सदर्न मोस्ट, वहां पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, जो कि पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है। ओके, चलो तो अब इसका आंसर दो। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी, इज इट नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इज इट साउथ ऑफ द इक्वेटर? इज इट एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? or is it at the north of equator? Which option is correct? You just give me the option number, option article, option alphabet. See, for this your analysis of your map should be very crystal clear, ठीक है। और वही काम हम करते हैं, जो हमारा मैपिंग करते हैं ना। अब आप देखो, हमने जो मैपिंग किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप उसके बारे में भी सोचोगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हमने वो मैपिंग जो देखा था ना, वो मैप भी इनफ है इसका आंसर देने के लिए। एंड आई एक्सपेक्ट मैक्सिमम ऑफ यू विल गिव मी द करेक्ट आंसर। बताओ। कौन दे रहा है आंसर मुझे इसका? D is the answer. Okay, D should be the answer. Students, see, north of Tropic of Cancer, क्या संबंध? अभी देखो आप, अगर हमारा just wait, I'll show you the map. Now if you see our India, where has that map gone? Okay, yes. Is it visible? Is it visible? Yes, it is visible. So this is the equator, 0 degree. ये जो है ना, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में उन्होंने बोला हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की सदर्न में। तो आप बोलो क्या संबंध सदर्न में होने का? चांस, कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे कन्याकुमारी हमारा यहाँ पे, हियर वी हैव कन्याकुमारी, है ना। और उन्होंने बोला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, तो वो भी चांस नहीं है, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो मतलब
हमारा नॉर्थ इंडिया जाता है, साउथ इंडिया आने का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो है कहाँ पे ये, नॉर्थ टू या अबव टू द इक्वेटर, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। डिड यू गेट दैट? तो इसके लिए अगर आपको ये मैप भी याद रहता तो आप बहुत आसानी से मुझे आंसर दे पाते। समझ में आ गया? चलो, इसीलिए हम मैपिंग इतना अच्छे से करते हैं ताकि आपको ऐसा कोई भी सवाल मुश्किल ना लगे। ओके, सो इफ यू सी हियर, है ना, दिस इज अनदर मैप। यहाँ पे है कन्याकुमारी, है ना, और ये है इक्वेटर। सो अबव द इक्वेटर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव आने का कोई चांस नहीं है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आने का कोई चांस है उसका। ठीक है, समझ में आ गया? लेट मी शो यू अगेन द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन यहाँ पे कि हमने देखा नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नो चांस, साउथ ऑफ द इक्वेटर नो चांस, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नो चांस, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, shall we move on then? Yes. The Radcliffe line is a boundary between whom? कौन बता रहा है इसका आंसर? रैडक्लिफ लाइन किसने और कब बिछाई थी और किसके दरमियान बिछाई थी? ब्रिटिश ने बिछाई थी। कौन था रैडक्लिफ? रैडक्लिफ का नाम सुना है? नहीं सुना है। So let me tell you the answer should be A, India and Pakistan. Now let me tell you in brief that on 17 August 1947, ठीक है, 17 अगस्त, ये नोट डाउन करो, 17 अगस्त 1947 नोट डाउन करो ये, और मैं जो बोल रहा हूँ आगे वो भी नोट डाउन करो कि on 17 August 1947 the border line that separated India from Pakistan was drawn, ठीक है, या was established, लिखो, the border line which separate India and Pakistan was drawn and it is known as Radcliffe line, ठीक है, and it is known as Radcliffe line। आपके सामने Radcliffe लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, मैं स्लो बता रहा हूँ। मैंने ऐसे बताया कि on 17 August 1947 the border line that separate India from Pakistan was drawn, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, on 17 August 1947 मैंने उस पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है डेट, the border line that separate India from Pakistan was drawn and it is known as Radcliffe line, okay, it is known as Radcliffe line। हो गया लिखकर? It was named after the chairman of border commission, Sir Cyril Radcliffe। अब दूसरा पॉइंट ऐसे लिखो, it was named after the chairman of border commission, it was named after the chairman of border commission
सर सिरिल रैडक्लिफ, सिरिल का स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, CYRIL, रैडक्लिफ का तो स्पेलिंग आपको पता ही है, ठीक है। सो मैंने ये कहा, आई एम रिपीटिंग, इट वाज नेम्ड आफ्टर चेयरमैन ऑफ बॉर्डर कमीशन सर सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, मल्हार ने लिखा हुआ है, देखो आप चैट बॉक्स में भी देख सकते हो। इट वाज नेम्ड आफ्टर द चेयरमैन ऑफ बॉर्डर कमीशन सर सिरिल रैडक्लिफ। ओके, हो गया, चलो वेरी गुड। अब आपको अगर सिरिल रैडक्लिफ के बारे में अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ही वाज अ लॉयर फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, ही वाज अ लॉयर फ्रॉम इंग्लैंड। सर सिरिल रैडक्लिफ जो थे, ही वाज अ लॉयर फ्रॉम इंग्लैंड। समझ में आ गया? चलो मिथिलेश, मैंने पूछा ही नहीं अभी तक वो सवाल। We are not into that yet. So the border line which we calling as a Radcliffe line, it is a today it is the international boundary between India and Pakistan, okay, on the western side, and the and between India and Bangladesh at eastern side. Why? Because Radcliffe ने जब लाइन लगाई थी तब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। सो टोटल इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो ईस्टर्न लाइन हो या वेस्टर्न लाइन हो, दोनों के दोनों Radcliffe लाइन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो, now give me the answer of question number 15. Give me the answer of question number 15. Okay, so answer of question number 15 is eyes. ठीक है, मायोपिया जो है इट इज कनेक्टेड विथ आईज। अभी वेरी काफी साइंस का क्वेश्चन है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, और मायोपिया मतलब इट इज द कॉमन विजन कंडीशन इन विच यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर टू यू क्लियरली, ठीक है, जिसमें आपको आपके नजदीक के ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं, जबकि दूर के उतने क्लियर नहीं दिखाई देते, ब्लर दिखाई देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सो इस कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं, ओके, जिसमें आपको नजदीकी जो आपका ऑब्जेक्ट है, नजदीकी चीज जो है ज्यादा क्लियर दिखाई दे, दूर की चीज थोड़ी ब्लर दिखाई दे, है ना। इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड विथ आईज। समझ में आ गया? बाकी जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, बाकी जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, वो क्वेश्चंस जो है सारे साइंस के क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमारे काम का है, हाँ, जीएस का क्वेश्चन है। ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स व्हाट? Ozone layer restricts what? So this is very easy question. Yeah. आपने लेयर ऑफ एटमोस्फियर पढ़ा है क्या? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, ये सब पढ़े आपने? Yes, very good. So ozone layer restrict which? It restricts the ultraviolet radiation from sun. Okay. Now can you tell me ozone layer is located in which atmospheric layer? Like, is it in troposphere, is it in the stratosphere, is it in thermosphere, is it in exosphere or ionosphere? जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर जो है हमारे, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? वेरी गुड समी शेख एंड तन्मय,
वेरी गुड शुभम, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। ओके, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर अस। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेटोस्फियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर वही ओजोन लेयर जब स्ट्रोपोस्फियर में आ जाता है ग्राउंड लेवल पे, तो वो एक पॉल्यूटेंट बन जाता है, ठीक है। सो हर चीज की अपनी एक जगह होती है। जब वो स्ट्रेटोस्फियर में रहता है तब वो अच्छा काम करता है, तब हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। मगर जब वो ट्रोपोस्फियर में नीचे आ जाएगा, सपोज ओजोन इज कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट इन लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमेशा याद रखना, ठीक है। इट कॉजेस पोल्यूशन, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पोल्यूशन एट नियर द ग्राउंड लेवल। इज दैट क्लियर? अरे समझ में आया क्या? यस, ठीक है। चलो, हमारे जो सारे क्लाउड्स आते हैं वो कौन सी लेयर में आते हैं? क्लाउड जो दिखाई देते हैं हमको जिससे बारिश हो रही है, या फिर जो भी नॉर्मल क्लाउड्स, whatever you see in the sky, all those clouds belongs to which layer? All the atmospheric activities like raining, cloud formation, all this happens in which layer? Like I'm asking about layer, which troposphere, stratosphere या फिर thermosphere, कौन सी स्फीयर में आता है? Formation of cloud, other activities of atmosphere, maximum activities of atmosphere कहाँ पे होती है, कौन से लेयर में होती है? Very good. It all takes place in troposphere, not stratosphere. It is troposphere. Troposphere का स्पेलिंग देखो, समीशेक, it is TRO, not TRA. Very good, everyone, you are right. So ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बारिश गिरती है, सारा फिनोमेना जो है हमारा ट्रोपोस्फियर में होता है, मतलब जो सबसे लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारे पास की, वहां पर होता है। आप ट्रोपोस्फियर के ऊपर चले जाओगे, आपको कोई आसमान नहीं मिलेगा। तो अगर आपने एरोप्लेन से अगर सफर किया है तो आपको पता होगा कि वंस अभी एरोप्लेन अगर आपका ये बादलों के ऊपर चला जाए तो आप बादल के ऊपर होते हैं, आपके ऊपर उसके बाद कोई बादल नहीं होता, एवरीथिंग इज जस्ट क्लियर। तो जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और हमारे जो एयर स्पेस है, एयर फ्लाइंग जो होती है, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है। समझ में आ गया? ताकि कोई क्लाउड फॉर्मेशन का इशू ना हो। चलो, excellent. Now give me the next answer. Question number 19. Durand Cup is associated with the game of, कौन से गेम से एसोसिएटेड है ड्यूरेंट क्लब? कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबका आंसर सही है। सो ड्यूरेंट कप जो है, इट इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ फुटबॉल, एंड द ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट is a football competition in India which was first held in 1988 in Shimla, ठीक है। So not 1988, it is 1888. 1888 से जो है ड्यूरेंट कप होता आ रहा है हमारे देश में, और सबसे पहला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? शिमला में, ठीक है, शिमला में हुआ था, शिमला में, शिमला लिख लो। 1888 से हो रहा है ड्यूरेंट क्लब, ये लिख लो, ड्यूरेंट कप, ओके। और पहला ड्यूरेंट कप जो हुआ था वो शिमला में हुआ था, ये भी लिख लो, ओके। हो गया? चलो, next and probably the last question of today's lecture is, for seeing objects at the surface of water from submarine underwater, the instrument used is periscope. Very good guys, ठीक है।
बेसिकली हमारे नेवी जो है, हम सबमरीन में ये काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि सरफेस का या सरफेस के ऊपर का भी ऑब्जेक्ट हमको दिखे और हम प्रॉपर टारगेट कर पाए, ठीक है। वेरी गुड, सो पेरिस्कोप शुड बी योर आंसर। चलो 21 का भी दे दो, 1-2 मिनट बचे तो। India's first nuclear test at Pokhran in Rajasthan took place in which? वेरी गुड। देखो थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया हमने इस बारे में, इंदिरा गांधी की बात चल रही थी हमारी 1974 में, राइट, तभी हमने डिस्कस किया इसको। सो योर आंसर शुड बी 1974। तब प्राइम मिनिस्टर कौन था देश का? किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ था ये सब? हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है पोखरण में, यस, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ था। ओके, चलो तो देन we are done with today's lecture. Okay, I will see you most probably on Monday in our next lecture. Till then, let me prepare the notes for you. Okay, and once the notes are prepared, I will share the notes with you by today evening. Okay, I will share the notes with you by today evening itself, so that tomorrow you can read all the notes. Okay, read all the notes. On Monday I will have a little test, oral test with all the notes. ठीक है, एक oral test होगी जैसे हमारी लेक्चर के इनिशियल में होती है। मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा आज, वो सारे के सारे नोट्स आपको संडे के दिन रिवाइज करने हैं और मंडे को आपके दिमाग में सब होना चाहिए। ओके, चलो I'll see you soon. Till then, take care, study well, revise well. Okay, Jai Hind.
Hello. Good afternoon, everyone. Am I audible? ये लेक्चर शुरू किसने किया है?